Hello guys, my name is Devanshi and how are you all doing? So I recently took the Cerebellum National NEET PG mock and that was of the standard difficulty level and I took the test and I want to tell you that before taking the test, when we are changing a source, like I normally follow the grand tests of Marrow, and I think most of us solve the grand tests of Marrow only. So that's like ubiquitous. So after while I'm switching from Marrow to some other platform, I get kind of पैनिक अटैक्स होने लग जाते हैं. लाइक वाइल आई वॉज टेकिंग दिस टेस्ट आई फेल्ट लाइक आई वॉज डूइंग समथिंग अनयूजल, कुछ एलियन वाली एक्टिविटी कर रही हूँ मैं. पूरा का पूरा GT देते टाइम आई वॉज फीलिंग रियली ऑकवर्ड. It didn't feel like I was taking a mock test. It felt like I am challenging myself to death, to be honest. And I somehow knew ki it will take some time for me to increase my score. And I wanted to share my experience, and if you guys have any advice for me too, I would love to hear it. So yeah, let's just get on with it. I have scored four. I scored 133 corrects, and I got something like 45 questions wrong. So yeah, I know it's not a good score, I know, and that's why I wanted to share my emotions with you guys. So yeah, in the NEET PG national NEET PG mock, like I scored something around 570s. So the progress of GTs, I think I started from 460 के बाद it increased to 530, and वो 530 increased because of some I was so desperate, I was so keen on increasing my marks that I started to cheat. I don't know if you guys do that. I don't know if you guys relate with that, but I did do that. I did that once. What I did was I was taking my exam on a laptop, and side में मैंने I opened a new tab and I started to search for the answers, thinking that I know it and I just have forgotten it, so why not just search it and then I'll write it. Main exam mein I won't forget such stuff. And I scored 530 marks in that, and I was really 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 sad because I knew that that was not my real score. So that was the first and last time I did that. So if you guys do that, or if you guys have this intrusive thoughts ki karna hai, I'm telling you, you'll regret it and you'll feel really bad. Please don't do that. Please don't do that, because I have done that, and those scores just put you down more. So don't do that, please. So yeah, after that I didn't study for 1 month. I was having duodenitis and I was having some issues, so I didn't study for 1 month. There are times during preparation when we go off the track, and that was the time. It was around January, when I was going off track. I wasn't able to study, I was really unwell, and I was suffering from problems. So that's why I didn't study at that time, and then I decided ki I should start by giving some GT. So it was like a baseline GT. So I scored 400 something in that, 480 के आसपास I scored in that, and I was okay, I was happy. And I started preparation again, and from that onwards I increased. I first scored 500, and then I scored in 520s, and then I scored 550. But the only thing which I want you to understand from this journey up until now is that 550 के बाद all of a sudden it dropped to 520. Now I felt that scores will never ever remain the same. That's what I felt, because up and down मेरा होता है कि मेरा पहले ऐसे ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते अचानक से नीचे चला गया, and for about 10 GTs it was constant. And in fact in one GT I scored something around in 480s. So I was demotivated so much, and I felt like कि यार
किसी के साथ नहीं होता, बिकॉज व्हेन वी लुक फॉर वीडियोज़ इन यूट्यूब एज टू हाउ टू इंक्रीज आर GT scores, everyone says that read the bottom 3 subjects, bottom 5 subjects, and then you'll increase the score, and then again read the bottom 5 subjects, then you again increase the score. तो everyone makes it seem so simple कि ऐसे ऐसे करोगे तो बढ़ता जाएगा स्कोर, बट मेरे को ऐसा नहीं फील हुआ. आई फेल्ट दैट ऐसे 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 करके अचानक से ऐसे 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 भी जाता है, बट वॉट आई रिड्यूस्ड वॉज कि ऐसे ऐसे के बाद ऐसे ऐसे भी जा रहा है तो भी वो प्रोग्रेस ही है. समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. So that's what I started becoming happy. Even when I used to take a GT, I started becoming happy, and I feel like this is something which everyone should follow. Ki even if you're taking a grand test and you're not scoring good, then also it's a thing to be happy about, because you are at least one step better than what you were before taking that GT, because at that time you didn't even know where you stand, and now at least you have taken a test. Even if you don't score good in that, who cares? Nobody cares about that, right? So yeah. And there's one more thing. I wanted to discuss about reviewing. What I see, I am not a person who has got selected right now. Even I am on the same page as you are. So I would like to share my experience, and I would like to know your experience too in the comments, so that it feels like it's a one-on-one, it's one-on-one discussion. So yeah, what I did do is, for the first 5 to 6 GTs, in fact more than that, I didn't review. What I used to do was, I just used to look at my marks, be very happy, go out all day, and then come back and start studying the next day onwards. So if you're not able to review, so I think that's a universal experience, because I don't find it easy to review those 200 questions. It's so difficult to review 200 questions, especially when you are an average student. It becomes really tough. So if you feel like 200 questions review nahi ho rahe, then you're not the only one. You and I are the same. Okay, so dheere like after about 10 GTs, I started to get the hang of it. That what you have to do is start reviewing from question 0, मतलब question 1 to question 200. Consider it like तुम questions कर रहे हो, जैसे तुमने, even if you have taken a GT and you scored 170 correct in that, then also you review all the 200 questions, because क्या पता हमने तुक्का मारा हो, right? In an exam, I think I always know only 50%. बाकी के कुछ % मैं तुक्का मारती हूँ, educated guesses थोड़े बहुत थोड़े, and most of them I leave. So I feel like we should review all the questions, but then it used to take so much time for me. So what I used to do was, in my first few GTs, I used to take about 1 week to review. I think people condemn this kind of activity. People say that you have to review everything at once, एक ही दिन में review करो, but it's not humanly possible for someone to review everything when you haven't even taken the test properly. It takes time. You can't expect to someone like someone to be at top position when they're starting from 0. हमें तो धीरे से start करना है ना. So what I did was, I used to take 1 whole week to review the GT, and मैं ज़्यादा मतलब ना I used to review only the questions which more than 30% of the people had got correct. 30% से कम I didn't review, because at that time I didn't have that knowledge कि मैं 30% से कम वाला attempt करूँ. I didn't even used to understand the solution, let alone the answer. So I stopped reviewing less than 30%. At that time, I didn't even want to be in that 30%. I wanted to be in the 70%. So I stopped reviewing those less than 30%. तो ऐसे में जो भी questions रहते थे, I used to review. But how? मैं क्या करती थी कि every day I used to every week I used to pick 2 subjects. कि मैंने जैसे ऑफ था पकड़ा, और मैंने एक और कोई छोटा फार्मा सब्जेक्ट पकड़ा. सो आई यूज्ड टू रिव्यू दैट, एंड एवरी टाइम आई यूज्ड टू रिव्यू दैट, मतलब आई यूज्ड टू स्टडी दैट, आई यूज्ड टू रिव्यू द क्वेश्चंस विच केम इन GT, इन ऑल द GTs दैट आई हैड गिवन. सो फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे को ऑफ था पढ़नी है, और इससे पहले मैंने 5 GTs दिए, तो क्यूमुलेटिवली मैं 5 GTs के ऑफ था के क्वेश्चंस रिवाइज करूँगी. सो दैट वे मेरा एक वो बना रहता था,
एक माहौल टाइप का सा बन जाता था कि हाँ आई एम स्टडिंग ऑफ था, और साथ में मैंने पूरा एक निपटा लिया जीटी क्वेश्चंस को, ऐसे बेटर समझ में आता था. सो फॉर द फर्स्ट फ्यू जीटीज दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू, एंड इट यूज टू टेक टाइम. एक महीना मेरे को इट टुक मी टू गेट बैक ऑन ट्रैक, ठीक है. बट आफ्टर दैट, so now since we don't have that much of time, what I think we can do is कि हर दिन GT देना तो impossible है, because right now we even have to revise. So what we can do is we can take a GT every week for 3 वीक्स के लिए हम लोग 3 GTs टोटल दे देंगे, ठीक है. और उसके बाद क्यूमुलेटिवली हम लोग करते रहेंगे रिव्यू से, ठीक है. सो वॉट यू कैन डू इज़ you take a GT this week. For example, you take a GT today. अगले हफ्ते तुम्हें इसी टाइम पे GT देना है, so you have full time till that. You review it every day और साथ के साथ अपने सब्जेक्ट्स रिवाइज करते रहो. अब हमें उतना टाइम नहीं लगेगा. All we have to do is some revision material. तो साथ में हम लोग अपने GT के क्वेश्चंस रिवाइज भी करते रहेंगे. प्लस मैरो हैज़ दैट ऑप्शन ऑल्सो आई गेस, जिसके अंदर यू कैन रिव्यू योर इनकरेक्ट, करेक्ट एंड लेफ्ट GT ग्रैंड टेस्ट क्वेश्चंस. सो यू कैन मेक अ कस्टम मॉड्यूल ऑफ योर रॉन्ग क्वेश्चंस. तो ऐसे आई थिंक हमको ये नहीं लगेगा कि हम लोग कुछ बड़ा GT वाला रिव्यू कर रहे हैं. यू कैन स्टडी एंड देन यू कैन रिव्यू अलॉन्ग विद दैट, ठीक है. सो just study and then review cumulatively all the GTs, ठीक है. because right now if you expect to solve 20 GTs like everyone says कि बहुत सारे GT करो, then we'll end up doing 0 GTs. keep a goal कि यार 3 GTs देने हैं 3 हफ्ते में, और 2 GTs 3 हफ्ते में. that's more doable. 3 हफ्ते में 2 GTs and you review that completely, how much ever long time it takes, and that will have more effect on our preparation than taking a GT every day, है ना. तो ऐसे करो. आफ्टर यू गेट द हैंग ऑफ इट, मैक्स टू मैक्स आई प्रॉमिस यू, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा. 3 हफ्ते में यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर रिविजन्स, राइट, एंड यू विल बी एबल टू टेक 2 or 3 GTs. अब तुम्हारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा. कंसिडर दोज 2-3 GTs एज समथिंग विच यू हैव रियली वर्कड हार्ड ऑन, बिकॉज अब तुम्हारा वो स्टैंडर्ड हो जाएगा. डोंट कंसिडर कि यार मैंने क्वेश्चंस नहीं करे, मैंने GT बहुत कम दिए, बिकॉज एवरी वन इज ट्राइंग टू अचीव सो मच दैट वी डोंट एंड अप एप्रिशिएटिंग वॉट वी आर डूइंग. व्हेन आई टेक GTs आई स्टार्ट कंपेयरिंग माई सेल्फ टू पीपल जो 20-25 GTs दे रहे हैं, एंड देन आई एंड अप कंडेमिंग माई 2 GTs or even my 10 GTs, and at the end of the day it nullifies to 0, and the other person might be sleeping properly in their houses. और मैं बैठ के रो रही होती हूँ कि मैंने सिर्फ 10 GT दिए है. This is just an exaggeration. Okay, so what is good, what we can do is at least appreciate तो करो. जो हम लोगों ने GT दिए है उसको appreciate तो करो. Only then you will be able to find out the mistakes. So that's what you can do. तुम 3 GTs दो 3 हफ्ते के अंदर, मतलब 2 GTs दो 3 हफ्ते के अंदर, वॉट एवर सूट्स यू, बट यू रिव्यू इट कम्प्लीटली. हाउ मच एवर लॉन्ग इट टेक्स, यू हैव टू रिव्यू इट. अब चाहे तुम 1 हफ्ते में 1 GT रिव्यू करो, दैट इज समथिंग विच इज़ डूएबल, यू डू दैट. अब क्या करना है कि यू टेक अ फोटो, यू सॉल्व द GT इन योर लैपटॉप और योर टैब, एनीथिंग, दैट इज नॉट मैटर, एंड देन यू टेक अ फोटोग्राफ ऑफ इट, ठीक है, एंड यू मेक अ सेपरेट फोल्डर ऑफ द रॉन्ग क्वेश्चंस और द तुक्काफाइड क्वेश्चन विच यू थॉट कि यू हैड टू सॉल्व इन अ सर्टेन वे, एंड बाई चांस आंसर सही हो गया, बट it was supposed to be solved in some other way, and it can help you in your main exam. So you just take a photo of that, and then you can take a whole day for reviewing. You don't have to study anything that day. All you can do is just revise some volatile subjects, do some subject which you like if you want to. मैं नहीं पढ़ती थी, GT देने के बाद मैं पूरा दिन सोती रहती हूँ, मुझसे नहीं होती उस दिन पढ़ाई. The next day when you wake up, what you can do is, because मैंने ये टेक्निक अभी निकाली है and I found it a bit doable and it is nice also. So before starting anything the next day, what you can do is you can revise. जो भी तुमने questions, तुमने अगर 5 questions भी GT के रिवाइज करे एक दिन, तो next day आफ्टर वेकिंग अप यू फर्स्ट ओपन योर मोबाइल, वो अपना फोल्डर खोल लो, वो 5 क्वेश्चंस देख लो कि अच्छा ऐसे 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 करने हैं. सो दैट विल हैव a reinforcing effect on your brain. I found it very helpful in increasing my scores. So we can do that. So first. Secondly,
I have made a bulletin board like this. This is something which I have tried, and I think many of you might be doing that. And in fact, I saw it on Telegram. Someone used to do it. So yeah, what I did was I started doing like this. So all these are some wrong questions and some T&D questions. So I did it in the same way like I told you, that I used to wake up and then trying to reinforce it, and जो मुझे अगले दिन भी ऐसा लगता था कि मुझे याद नहीं है, तो मैं उसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, और ऐसे पड़ा रहता है सामने. बहुत बार ऐसा होता है मैं देखती भी नहीं हूँ, बट इट डज गिव यू अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस. और नहीं तो यहाँ से चलते फिरते हम लोग देख ही सकते कि हाँ चलो ठीक है, ये चीज़ थी, ऐसे करना है. सो दैट्स अ गुड वे, यू कैन डू दैट. इट्स लाइक छोटी कॉपी बट विदाउट द स्केरी नेम छोटी कॉपी और 20th नोटबुक. इट्स लाइक दैट. सो यू कैन पुट इट ऑन योर वॉल समवेयर. एकदम ऐसी चीज़ें जो तुम्हें अगले दिन भी याद ना रहे. बाकी आपके पास फ़ोन के अंदर अपनी फ़ोटोज़ तो है ही, तो हम वो कर सकते हैं, राइट? So that's what. Now about reviewing a lot of questions and about taking GTs every day, I don't think that it's something which is wise, because I did try that last year when I was studying for the first time. I had made this goal that I will take a GT every day, because somehow social media makes us believe कि टॉपर वही है जिसने 25 GT दिए है, टॉपर वही है जिसने 30 GT दिए है. So I started to believe in quantity. So I used to try to take so many GTs and I ended up giving zero GTs, to be honest. So the more tough goals we set, the more difficult it becomes to follow them. So I don't think that we should try to set goals for ourselves. है ना? We can definitely solve PYQs, because maximum GTs, what I found was, कोई भी जो GT होता है, लाइक दिस इज़ समथिंग विच आई फाउंड आउट आफ्टर रिव्यूइंग ऑल द GTs, एंड ये मेरी नॉलेज है जो कि मैं इम्पार्ट करना चाह रही हूँ, दैट जो सोल्यूशन होता है, लाइक इफ़ यू डोंट वांट टू स्टडी एनीथिंग, what you can do is solve the PYQs. like we make custom modules, right? So custom module के अंदर solution होता है सारे questions का. You start reading the solutions of all, और उसमें से जो ऐसे highlighted words होते हैं, like in all the websites there are highlighted words which they consider important. You mark those highlighted words. वो अपने पेपर पे लिख लो, कोई भी पेपर लो, उस पे वो highlighted words लिख लो. Many a times the MCQs are from those highlighted words. For example, I found a question like sebaceous cyst. अब sebaceous cyst is a question which has repeated in NEET. यहाँ पे एक फोटो होती है कान के पीछे पोस्ट ऑरिकुलर एरिया पे, it has a punctum, and they asked what is sebaceous cyst. Now the same question got repeated in a GT, and in a twisted way, as to whether it is transillumination positive and Paget's test positive or not. So I was like, I didn't even know what's that. I just knew it is sebaceous cyst. But then while studying more, I was solving the PYQs and I was seeing कि आंसर के अंदर कहीं ना कहीं दूर कहीं लिखा हुआ था रेड, मतलब एकदम बोल्ड ब्लैक के अंदर, transillumination negative but Paget's test positive, and that exact line got repeated in the GT. So मैंने ऐसे बहुत बार देखा है, like it has repeated n number of times. So if at all you are struggling to study, I advise you to follow this, because I have done it so many times and I found it very achievable. Because sometime इस टाइम पे सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता हम कर सकते हैं, बट वी कैन एटलीस्ट सॉल्व द PYQs एंड लर्न फ्रॉम दोज आंसर्स ओनली. सो दैट्स वॉट वी कैन डू. If you have some other advice, you can even tell me. I'll be happy to know. Now the other thing which I wanted to say is that I think that we have expected at this point of time, when many creators and many people just tried टू ल्योरस, कि अगर आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं GT में, तो आपके मेन एग्ज़ाम में आएंगे 110. अगर आपके अभी 120 आ रहे हैं तो मेन एग्ज़ाम में आपके आएंगे 130. सो समहाउ जिनके अच्छे आ रहे होते हैं ना, वो तो ठीक है, बट जिनके थोड़े एवरेज होते हैं, वी ऑल स्टार्ट गेटिंग सो स्केर्ड. वी ऑल स्टार्ट थिंकिंग दैट वी कैन
नॉट स्कोर, और कहीं ना कहीं वो हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ करवा देता है. सो आई thought of sharing my past year experience when I took 1 GT after completing the whole syllabus, and 15 days before the main NEET PG exam, FOMO में आके I took 1 GT from Marrow and I scored 400 in that. So you can imagine the number of corrects. And I knew कि मेरा selection तो नहीं होगा. I knew कि नहीं होगा, बिना GT दिए मेरा कुछ नहीं होगा, and was really scared. और सारे साइट्स पे लोग क्या बोलते हैं, मतलब सारे यूट्यूबर्स की, अगर आपके 110 से कम सही हो रहे हैं तो आपके 120 के आसपास आएंगे, या 120 भी क्रॉस नहीं करता. बट आई डिड स्कोर 140 करेक्ट के आसपास. सो नॉट 140, 130 के करेक्ट के आसपास. नाउ आई नो दैट्स नॉट अ गुड स्कोर, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि इफ़ मैं थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस ना होने की बजाय अपना जीटी पे ज़्यादा ध्यान, स्कोर पे ज़्यादा ध्यान ना देके उसको रिव्यू करके अपना दिमाग थोड़ा शांत रखती, तो शायद वो 130 का 140 बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. आई वॉज जस्ट एट पार. सो दैट्स व्हाट आई थिंक कि लेट्स नॉट look at random videos and try to extrapolate our progress, because nobody can define how progress is. It can, we all know, we have seen so many people who score good in GTs, and at the end of the day they end up scoring they end up scoring poor, because it's all about that particular day. So rather than thinking about that particular day, why don't we try to just take it one day at a time. Let's solve the questions and forget about them as in forget that they are something very important to us. बस सॉल्व कर लिया, उसको बस भूल जाओ, ज़्यादा सोचो मत, बिकॉज जितना सोचोगे ना उतनी चीज़ें दिल पे लगेगी. बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट, आई एम गोइंग थ्रू दैट, एंड आई डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स टू गो थ्रू दैट. नो, सक्सेस के नॉट बी लाइक दिस कि आपने एक्सट्रापोलेट करो और ऐसे ऐसे जाएगा. बिकॉज मैंने जो जीटी दिया उसमें मेरे आए हैं 486, 133 के आसपास करेक्ट है मेरे. और इससे पहले वाले जीटी में, एज यू ऑल माइट नो, कि मेरे इससे पुराने वाला जो जीटी था उसके अंदर मेरे बहुत अच्छे आ गए थे, और इसमें मेरे गंदे आ गए. नॉट गंदे, लेट्स नॉट डिमोटिवेट आवरसेल्व्स, बट नॉट एट पार विद वॉट आई स्कोर्ड. तो ऐसा होता रहेगा एज लॉन्ग एज योर ग्राफ इज गोइंग इन द फॉरवर्ड्स डायरेक्शन, इवन दो ऊपर नीचे साइड डजेंट मैटर. तो बस जीटी देना है, एंड डोंट गेट डीमोटिवेटेड. सोशल मीडिया पे सब अच्छी चीज़ें लिखते हैं, एंड अल्टीमेटली इट्स ऑल इन आवर हैंड. सो लेट्स नॉट overthink, and if you guys also have some other advice, do tell me. Okay, thank you.